Alright, this is our lecture number 13.2, which is manufacturing models and matrices. So again इसमें भी हम कुछ mathematics पढ़ेंगे. So I'll just put you through this. This will be in two parts. So part one will be covered today, and part two will be covered tomorrow. So in part one, we are going to define the production rate, production capacity, utilization, and availability. And this is all in relation to the manufacturing industry, manufacturing facility. ठीक है जी? So we go with this. So mathematical models we are going to talk about of the production performance. So in fact, what we are going to do in this today is to formulate these mathematical models, which are actually going to tell us that what is the performance, the production performance of our facility. Can that be increased? That can it be, number one, how can it be calculated, and then how can it be increased? So we are going to keep discussing these during the course of the lecture. So the first thing which gives us the production performance is called the production rate. So let me just pick up this color. So we are going to talk about the production rate, which is defined by Rp. All right, now let's see how it can be defined. Production rate of an individual processing or assembly operation is usually expressed as hourly rate, that is work units complete per hour, and it is given in piece per hour. So this is actually the hourly rate of work unit produced. I repeat. So production rate is the hourly rate of work unit produced. So if a facility is producing 12 units per hour and another is producing 14 units per hour, so this one has a higher or more production rate. Okay. We will see how this production rate will be determined for batch production, job shop production, and mass production, which is flow line. ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं. Batch production is the production in the form of batches. Job shop production is one of a kind, and mass production is very, very large quantities. So let us first define the production rate. So production rate के अंदर एक mathematical formula लाने के लिए हमें उससे पहले we need to have cycle time. We need to know the cycle time. So let us see. Let's put it here. So this is the cycle time. So how do we define the cycle time? Cycle time, TC, is the time an individual part spends on the machine. So this is the time spent on the machine. This is the time spent on the machine by an individual part. So a typical cycle time of a production operation can be given by TC, which is summation or sum of TO. What is TO? The processing time for the operation. So whatever operation you are carrying out, so how much time is going to take that? Let's see, you are carrying out turning on a lathe machine. So how much time will be required to carry out that turning? So this will be given in minutes per piece. So how much time you are taking per piece. Then is the handling time. Handling time is something which is TH, and this is the handling time of the part. कि उस पार्ट को आपने लोड करना है मशीन में, अनलोड करना है मशीन से, सो इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा. ठीक है. So this is TH, which is handling time of the part. Then there is a third term which is coming in, which is TTH. This is the third term, TTH. So TTH is, let me, एक मिनट मैं जरा ये स्विच ऑफ कर दूं, बीच में फिर मैसेजेस आने शुरू हो गए. ओके, सॉरी. Okay, the third term is the TTH, which is actually the tool handling time. So let me just encircle it here. This is tool handling time, and again this is given in minutes per piece.
So if you want, if you need to, or if you require to change the tool every time, so this will be the tool handling time for every operation. And if you want to, if you have one tool only, so this, the tool handling time will be for a batch, so that will be given to you. So the cycle time would consist of the time spent by a machine, by a part on the machine, which will include the processing time, या operation time, handling time of the material and the tool handling time. Okay, यहाँ तक क्लैरिटी है जी? कोई किसी किस्म का शक शुबा तो नहीं है यहाँ? ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। और अब हम देखने लगे हैं कि ये हमें कैसे ये साइकिल टाइम या ये प्रोडक्शन रेट्स कैसे नजर आते हैं। सो गौर से देखिएगा। सबसे पहली चीज बैच प्रोडक्शन। So a batch production time would be noted as TB, and it will, a batch production है तो batch production में हम setup time, TSU is the setup time. So this setup time will be required only once, क्योंकि batch production में अपनी मशीन को सेट कर लेते, so this will be required only once. ये बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे या ना समझ आई हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। ओके, सो ये आपका बैच प्रोडक्शन में जो सेटअप टाइम है वो एक ही दफा होगा मशीन का। देन हाउ मेनी क्वांटिटी यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, एंड टीसी इज द साइकिल टाइम। और ये साइकिल टाइम के अंदर ये जो टी सेटअप है ये मशीन का सेटअप है। सो लेट्स सी, टीसी के अंदर अगर आपने मशीन के सेटअप में आपने इंक्लूड कर लिया इसको अगर आपने इंक्लूड कर लिया मशीन के अंदर टूल के हैंडलिंग को, तो वो सेटअप टाइम में अगर आ गया तो वो फिर टीसी में नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ बैच प्रोडक्शन साइकिल टाइम, जो कि हमें सॉरी बैच प्रोडक्शन के लिए एक पूरा टाइम जो है कि कितनी क्वांटिटी बना रहे हो, कितना सेटअप का टाइम है और एक पार्ट के ऊपर कितना साइकिल टाइम लगा है। ओके, एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट विच इज कॉल्ड टीबी। तो ये एक यूनिट के लिए टीबी बाई क्यू, सिंपल मैथमेटिक्स, टोटल टाइम को आपने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो एक क्वांटिटी निकलेगी। प्रोडक्शन रेट क्या होगा कि आप ये कितने आपका टीपी था, एवरेज प्रोडक्शन टाइम एक यूनिट का कितना था, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 60। ठीक है, तो एक घंटे में ये आप एक घंटे के अंदर आपका प्रोडक्शन रेट क्या होगा, दैट विल बी पीस पर आवर। अब ये जरा गौर से देखिएगा इस वाली इक्वेशन को, ये गौर से देखिए। Since for a job shop production we have Q is equal to 1, so आपका जो TP है वो that will look like something like this। तो यहाँ पे जो Q था उसको मैंने 1 के बराबर पुट कर दिया। ये जो दो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये दो हाई क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फ्लो लाइन प्रोडक्शन। अच्छा चले मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले मैं सोच रहा था कि आई गिव यू दिस एज एन असाइनमेंट। अच्छा चलो मैं इसको मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी। सो प्रोडक्शन रेट क्या था, 60 ओवर टीसी, ये हमने पहले डिफाइन किया है, 60 ओवर टीसी। अब ये देखिए हाई क्वांटिटी प्रोडक्शन में क्यू जो है वो बहुत बड़ा लार्ज है। वजह क्यू इज वेरी वेरी हाई। सो ये जो मैंने टी सेटअप बनाया था, टी सेटअप डिवाइडेड बाय क्यू बिकम्स 0। सो जब ये 0 बन जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन रेट जो है वो सिर्फ इस टीसी के अंदर या इस टीसी में से या टीसी में से टीएसयू 0 हो जाता है। सो इट ओनली रिमेन्स टीसी। ये बात समझ आ रही है?
प्रोडक्शन रेट निकालने का। सर रिपीट करें थोड़ा। जी रिपीट करूं? ओके मैं रिपीट करता हूं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन थी, ये टीबी की इक्वेशन आपने देखा, ये जो बैच प्रोडक्शन में थी, दिस इज द बैच प्रोडक्शन का टाइम है। अगर मैं इसके अंदर ये बैच प्रोडक्शन को मैं ये कहूं कि अब ये फ्लो लाइन है, तो फ्लो लाइन में आपने क्या करना है कि टीएसयू एक ही दफा सेट होगा फॉर मिलियंस ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो जब मैं आरपी निकालना चाहता हूं तो आरपी इज एक्चुअली व्हाट, आरपी इज एक्चुअली टीबी ओवर क्यू। सो टीबी ओवर क्यू। सो अगर मैं इसमें आरपी को निकालना चाहता हूं तो सॉरी टीपी को निकालना चाहता हूं विच इज टीबी ओवर क्यू, इस वाले फॉर्मूला को मैं देखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम में जब मैं इसके ऊपर आरपी को लेके आऊंगा तो इसका जो प्रोडक्शन टाइम होगा फॉर वन बैच कह लो या एक फ्लो लाइन चल रही है, सो दैट वुड बी डिवाइडेड बाय क्यू, और क्यू सिंस वेरी वेरी लार्ज है, क्यू इज वेरी वेरी लार्ज, सो ये जो टी एस यू की टर्म है ये जीरो हो जाएगी, टी एस यू बाई क्यू। अच्छा लेट मी जस्ट पुट इट हियर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं कहाँ, इसकी जगह मेरे पास नहीं बन रही। अच्छा आई विल ट्राई टू राइट इट हियर, इस जगह पर लिखने की कोशिश करता हूं। ये देखिए टी बी ओवर क्यू, ये एक्चुअली क्या है आपका टी पी है, ठीक है, और यही आपका साइकिल टाइम भी बन जाएगा। अभी लेट्स सी, टी बी ओवर क्यू है तो क्या होना चाहिए, टी एस यू प्लस क्यू टी सी डिवाइडेड बाई क्यू, तो इन दोनों के नीचे क्यू आ जाएगा। सो ये जो टर्म है, ये मैं कह रहा हूं कि ये सिंस क्यू इज वेरी वेरी लार्ज, सो दिस टर्म गोज टू जीरो, और इस टर्म में से क्यू जब इसके नीचे आता है तो द ओनली थिंग विच विल रिमेन इज टी सी, क्यू क्यू से कट जाएगा, सो दिस विल ओनली बी टी सी, सो टी पी विल बी इक्वल टू टी सी, एंड वी नो कि आर सी या आर पी इज 60 बाई टी पी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 60 बाई टी सी डायरेक्टली लिख दिया है, और उसकी रीजन मैं क्या दे रहा हूँ कि जो टी एस यू बाई क्यू है वो जीरो हो जाएगा बिकॉज क्यू इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। ये बात अब समझ आती है जी? किसका सवाल था? Have you understood now? यस सर आ गई। यस Okay, great. Okay, that's great. Now come over to the flow line production. So ये भी मैं आपको explain करता हूँ. Let's see. Flow line production में क्या है? TR एक term मैं यहाँ पे introduce कर रहा हूँ. TR is the time to transfer the work unit between stations. Plus max TO. और ये मैक्स टीओ कौन सा होगा? ये मेरा बॉटलनेक स्टेशन होगा। आगे बॉटलनेक स्टेशन जो हमने डिफाइन किया था, सो ये बॉटलनेक स्टेशन होगा। सो मैक्स टीओ विल बी माय बॉटलनेक स्टेशन एंड टीआर विल बी द टाइम टू ट्रांसफर द यूनिट बिटवीन देम। फ्लो लाइन प्रोडक्शन की बात हो रही है। सो फ्लो लाइन प्रोडक्शन का जो साइकिल रेट है या प्रोडक्शन है, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसमें कि TC will be given by this, which is TR. TR is the time of transfer from one place to another between the stations, and max TO, which is the bottleneck station. So मैं bottleneck station को अब यहाँ explain नहीं करूँगा because इसको मैं पहले आपके साथ explain कर चुका। जी यहाँ तक कोई सवाल? क्योंकि ये इन फॉर्मूला को हम अपने यूज करने लगे हैं। All right. If there is no question, so now we are going to define the production capacity, which is called PC, and this is also called G. काफी नहीं हो गया सर? Sorry. सर आज के लिए काफी है सर? बस just 5 minutes. Just 5 minutes. Just 5 minutes. सर क्विज डिस्कस कर लेते हैं। जी क्विज सर just 5 minutes. क्विज डिस्कस करने? ओके सर। ओके जी जी मैं आपको बताऊंगा क्विज का भी। मैं मुझे जस्ट लेट मी जस्ट फिनिश दिस।
Okay, so this is the production quantity, which is also called plant capacity, and this is defined as the maximum rate of output that a production facility can give. Okay, so the higher the RP, so that will be the increased number of hours, so you will increase the production capacity. So you can higher the RP will production rate will give you increased production capacity, and this RP can be increased by increasing the number of hours of work. Let's see, this is one thing which can be done. या आप क्या करते हैं, you improve your processes so that your production rate goes up, यानी कि आपका जो TC है वो कम हो जाए. So one is you improve your process to reduce your TC, which will improve your RP, and that will increase your production capacity. If you are unable to improve the processes, so then what you can do is that you can have more number of hours into your work. Okay? So this is called production capacity. Production capacity can be defined as this, where N is the number of work centers that the machines you have. So these are actually the machines you have, number of work center. SW are the shifts per period, यानी कि आप एक दिन में कितनी shifts कर रहे हैं. HSH are the number of hours per shift, and then is the RP, hourly production rate. So this is going to give you the plant capacity. यहाँ पे एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि this is for one number of operation. ठीक है? Let's see, अगर if we have more number of operations, NO is greater than 1, so it will come down here. So this is actually telling us N greater than 1 is telling us that we have a complex part. So if NO increases, the production capacity will decrease. So हमने ये देखा था, आपको याद होगा, हमने वो एक अपना ग्राफ देखा था जिसमें हमने कहा था कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पार्ट कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो आपकी प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, तो आपकी प्लांट कैपेसिटी विल बी रिड्यूस. सो ये इक्वेशन ये भी आपने जहन में रखनी है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल दैट a turret lathe has 6 machines. A turret lathe section has 6 machines, so N is equal to 6, all devoted to the production of same part. The section operates 10 shifts per week, so this is SW. The number of hours per shift are 8, this is HS. Average production rate of each machine is 17, so RP of each machine is 17 units per hour. So इसमें देखिए हमें NO जो है वो नहीं दिया हुआ, तो we will take NO as 1. So just putting in the value, so we are going to have 8160 output units per week. अगर मैं इसमें पार्ट कम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूं, NO को 1 से ज़्यादा कर दूं, so मेरी ये प्लांट कैपेसिटी जो है ये this will come down. Utilization and availability are the two terms which I am introducing now. गौर से सुनिएगा. Utilization refers to the amount of output of a production facility relative to its capacity. ठीक है, let's see कैसे कि 100 यूनिट उसकी कैपेसिटी वो बना रहा है. So these are the 100 units Q which are being made. The plant has a capacity of making 100 units, so its utilization would be 1. Utilization 0 से 1 के दरमियान वेरी करती है. But if it is making 90 parts and the capacity is 100, ये वाला, so this will be 90. Similarly, 80 parts बनाते हैं, capacity is 100, so this will be 0.8. Utilization will be 0.8. So utilization is something which tells us that how much I am utilizing my facility as compared to my capacity. So this is utilization. Availability क्या चाहिए? I'll just go over this very quickly. So availability is something which is the measure of the reliability of your equipment.
Availability is the measure of reliability of your equipment. And the reliability is that is the system available to you to work for you. So I am introducing two terminologies here, mean time between failure and सर mean ये time. ये कल कर दो सर, टाइम कल हो कर ले। गया। ओके यस सर, बहुत हो गया आज। ठीक है, चलें, दैट्स ग्रेट। तो मैं इसको फिर अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन को हम कल दोबारा देखेंगे। ठीक है, चलें, मैं इसको फिर स्विच ऑफ करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग को। अभी कोई आपका सवाल है तो काइंडली पूछिए।